often students feel like the domain which they have chosen is a wrong one. They end up choosing wrong careers due to peer pressure. They end up making wrong career decisions, choices, and they end up living a frustrated life due to which they are not even able to be either professionally successful, neither they are able to live a personal, happy life. So, what would your advice be to an individual who either feels like their passion is something else, or how would you advise a person to find out what their passion is? अपना passion कैसे find कर सकता है कोई? That's another. So today you are banged with the great questions, Prince. I really appreciate that. This is also something which is needed to be discussed at large. Right now, maybe with this era, maybe my kids are there, so they want to do something as per their choice. And I am a parent who always try to support them. Okay, whatever you want. They don't want to be chartered accountant. They don't want to be engineer. My one daughter wants to be fashion designer. My other daughter wants to be music. And I'm supporting them whatever best I can do. But in our time, our parents also wanted, but at that time options were less. So anybody who is 30 plus right now, they might not have got those options what you are talking about. Choosing a right career or wrong career is second thing. Getting a career is as you told, unemployment. Suppose people are unemployed. He's a chartered accountant, but somebody is offering him a job which is not of his domain. Tell me one thing, whether he will be accepting that job or not. He has no options. He has to accept. Exactly. So we should not say that this is not my career, this is not your career, this is not something. If you have the privilege to choose your career, that's wonderful. My blessings to them that they should choose their own career, what they want. But in reality, it might be 10% people. But 90% are like, they don't have any career options. Either they don't have any awareness, or they are indulged with the career which is not suiting to their own passion, their own ability. But they have no option. They have to work. Okay. So now, when you are in a career which is not as per your need, requirement, or as per your own niche, what you should do? Let me happen. Suppose मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे ड्राइंग बनाने का बड़ा शौक है, कलर से मुझे बड़ा प्यार है, लेकिन मैं गलती से सीए बन गया और मैंने कैरियर चूज कर लिया चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, बिकॉज आई एम गुड इन नंबर ऑल्सो, आई नो दैट आई एम ए क्वालिफाइड पर्सन, आई एम ए इंटेलेक्चुअल पर्सन, मैं इंटेलिजेंट हूँ, डेबिट क्रेडिट करना आता है, फाइनेंशियल डेटा बनाना। अब मैं लेकिन बनना चाहता था आर्टिस्ट, मदर फादर ने अलाउ नहीं किया या सिचुएशन ने बताया नहीं मुझे कि मैं आर्टिस्ट बनूं। तो उनके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और इसी तरह से आप अलग जगह पर भी लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को। भाई अकाउंटिंग तो डेबिट क्रेडिट है, उसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे रिपोर्ट। तो अपना आर्टिस्टिक जो आपका माइंडसेट है आप रिपोर्टिंग में लगा सकते हैं। कैसे? डेबिट को डेबिट और क्रेडिट को कुछ नहीं कर सकते। और जब डेबिट क्रेडिट करके जो डेटा आया, आपने एक MIS बना रहे हैं, और इस MIS में अगर आपने एक ब्लैक एंड व्हाइट एक्सेल में एक MIS बना दिया, बहुत अच्छी बात है, वो भी काम करेगा। लेकिन आप आर्टिस्ट हैं, आपने बैकग्राउंड कर दिया, फॉन्ट व्हाइट कर दिया, कुछ ग्रीन कर दिया, कुछ रेड कर दिया, कुछ नंबर्स अच्छी तरह से जस्टिफाई कर दिए, कुछ बोल्ड कर दिए, और आपने वो अगर MIS को प्रेजेंट किया, टेल मी प्रिंस, क्या वो MIS उस ब्लैक एंड व्हाइट एक्सेल MIS से ज्यादा अट्रैक्ट करेगी? और अगर आपने उसमें और कुछ ग्राफ्स लगा दिए, यू नो, you have added, you did the work of accounting only, but with your artistic way or whatever inside in you, you have made it a bit modified. Tell me one thing, किसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, किस MIS को मिलेंगे? Definitely the one which is more presentable, yes. More presentable. तो आपने अपने आर्टिस्टिक टैलेंट को मोर प्रेजेंटेबल बना दिया, लेकिन आप अकाउंटिंग में ही, वो कैरियर में है जो आपको पसंद नहीं था, लेकिन आपने अपने उस कैरियर के साथ अपनी एक और चीज को ऐड कर दिया। आई एम नॉट सेइंग एट 80% एंड 20% अकाउंटिंग रखिए, नहीं, 80% अकाउंटिंग रखिए बिकॉज दैट इज योर प्रोफेशन, 20% अपना आर्टिस्टिक वे रखिए। यू विल गेट योरसेल्फ सेटिस्फाइड, ओके आई एम नाउ यूजिंग माय टैलेंट इन दैट अदर फील्ड, मर्ज्ड इट, दैट्स सक्सेस। तो लोग जो परेशान होते हैं जॉब के अंदर, सबसे पहली बात, उनको अपनी बेसिक एंटिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। सब लोग आपके जैसा सोचे, ऐसा नहीं है। उन लोगों को जो किसी भी तरह से फंस गए हैं कहीं पर भी, और अगर वो अपने इस तरीके को अपनाकर उस काम को खुशी से करते हैं, they will not only get success for themselves, but they will also contribute more for the organization where they are working. It will. So this is the one way.
Okay, so you mean to say कि we need to be building a combination between our passion and the main profession, the qualification which we have? Otherwise you can't live. You can't Okay. live, let me tell you, because जो दिल से अंदर से जो ओरिजिनलिटी है Mm-hmm. उसको अगर आपने दबा दिया Mm-hmm. तो आप ना खाली अपने लिए गलत कर रहे हैं बल्कि उन सब लोगों के लिए गलत कर रहे हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। Mm-hmm. आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी नेगेटिविटी भी उन लोगों में पहुंचेगी। Mm-hmm. बेटर है कि अपनी चीज को दबाइए मत, उसको उजागर कीजिए। अगर आपको ऑप्शन मिलती है और अगर नहीं मिलती, देन गेट योरसेल्फ एसोसिएटेड विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, Mm-hmm. अदर कम्युनिटीज वेयर यू कैन एटलीस्ट लिव योर ओन वे। Mm-hmm. आप इसको करिए, ये तो जरूरी है क्योंकि पैसा तो चाहिए, आपको सैलरी चाहिए, आपको बहुत सारे कमिटमेंट हैं, and but you can associate. So that is one way. And second thing, when you choose your career, if you have blessed Mm-hmm. to choose your own career as what you want, nothing better than. Okay, that sounds an interesting advice, like building Yes. a combination between these two things, because often people are not able to do so and they end up being frustrated. With this comes my other question, sir. The question is about the importance of soft skills and presentation skills. Because I, being in CA profession, I have seen people who are very good at accounting, auditing, taxation, transfer pricing, everything. But when they sit in the interviews of big fours, of big MNCs, they're not able to crack those interviews. Reason being, they do not have the skills. Do you think our education system ignores this skill, like soft skill, public speaking, presentation skill? And what exactly is required to be done? Interview में you need to be confident. Mm-hmm. Confident doesn't mean that overconfident. So there is a very thin line difference in confident and overconfident people. So interviewer who are taking an interview, उसको काफी कुछ मालूम है, and questions भी वही पूछेंगे जो उनको मालूम है. You will not ask anything which they also don't know. Maybe by a chance they might, but otherwise no. So you need to be very careful while answering. My only advice that don't answer which you don't know. Simple say, sir, I may take time or I don't know this particular concept. This is fair enough. And you won't believe my first job in Aptech Limited, they have 5-6 questions on accounting term. It was my initial, when I was CA inter only. Out of that, 2 questions I did not answer because I don't know that terminology. Let me tell you frankly. Still I got selected. That was my first job. So इसका मतलब ये है कि chances हैं, so there is nothing to worry about. However, what you are answering, sometimes what happen, nervous हो जाते हैं ज्यादातर इंटरव्यू में. तो नर्वस होने का कोई मतलब नहीं है. वो नर्वस होने का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लास्ट है. It is not the end of life. Think about the worst. When you go for anything, let me tell you one guru mantra. Think about the worst, what can happen. अगर आपने ये सोच लिया कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड और खुश आदमी हो. क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचोगे उतना कभी नहीं होगा, मैं बता देता हूँ. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जॉब नहीं मिलेगी. ज्यादा से क्या होगा, दोबारा इंटरव्यू में चला जाऊंगा. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़े बहुत मेरे दोस्त हंस लेंगे मुझ पर. जिंदगी खत्म नहीं होती, तो चिंता करने की जरूरत नहीं. देयर इज नथिंग टू वरी. Yes. The other question I have is about the current trend in India. The current trend is, since this is a statistic, it is a fact that around 65% of the Indian population is below 35 years of age. So we have uh, a youthful population, which, if not utilized properly, if we do not capitalize on this human capital, we won't be able to become or realize the dream of becoming a developed country, a developed nation. But what usually is a trend these days is everyone is searching and looking for safe, especially government jobs. People are wasting 5 to 7 and even 10 years sometimes of the prime time of youth in looking for government jobs. And once they find out the seats are limited, the number of seats you're going to be getting in, every vacancy which is coming out, it is limited. And even PhDs or big degree holders are applying for those jobs and they end up not getting them. So what would your insight be, given the fact that you have an experience in the education sector? What does the system need to do differently, number one? Plus, what does the youth need to do differently and not waste their prime time of life in searching for safe jobs and they do not end up getting them? A majority of those people do not end up getting safe jobs.
So very, very true, Prince. I really can link what you are saying. I can connect with that. And this is also very big problem right now, Mm-hmm. especially in India and other developing countries which have larger populations but lesser employment. Exactly. But if we see, like, I don't know why people don't go and don't think about that. As you say, 35% is one who are safe, or maybe 65% who are really searching for these things. And this is true also. Mm-hmm. Who can create jobs? First, we need to understand what happens. There is a tree Mm-hmm. which always have a root. Mm-hmm. Or so, despite of working on the roots, we are working on the branches. Mm-hmm. सुंदर बनाना है ट्री को, कट किया, उसको ट्रिम किया, सब कुछ किया, बड़ा सुंदर बन गया, लेकिन जड़ में कीड़े लगे, Mm-hmm. जड़ में प्रॉब्लम है। तब जितना भी उसको सुंदर बना ले, कुछ टाइम बाद वो वैसे ही खराब हो जाए। राइट नाउ द रिक्वायरमेंट इज टू वर्क ऑन द रूट, नॉट ऑन द ब्रांचेस। जो लोग सेफ कैरियर सर्च कर रहे हैं, सेफ्टी कहाँ है मुझे ये बताओ? नथिंग इज सेफ, सो डोंट सर्च फॉर सेफ जॉब, सेफ कैरियर। 3 months, Mm-hmm. only 3 months is there for all safe carriers. That 3 months is notice period, Okay. isn't it? Exactly. 3 months है, उससे ज्यादा नहीं है। Mm-hmm. 3 महीना आपको पसंद नहीं, आप 3 महीने का नोटिस दो, आप चले जाओ। कंपनी को आप पसंद नहीं है, 3 महीने का नोटिस दे, आप चले जाओ। Mm-hmm. जाना तो है ही ना, ना Exactly. तो कंपनी रुक रही है ना आप रुक रहे हो। Exactly. हर एक की अपनी इंडिविजुअल जॉब है, हर एक की अपनी इंडिविजुअल जिंदगी है। कंपनी ने निकाला तो आपको 10 लोग छोड़ेंगे, आपने छोड़ा तो कंपनी को 10 लोग मिलेंगे। तो Exactly. कहीं पर कोई ऐसा एहसान नहीं कर रहा कोई। इट्स Mm-hmm. मैटर ऑफ 3 months ओनली। हो Exactly. सकता है 1 महीना हो, कहीं 6 महीना हो, बट ऑन एन एवरेज 3 months है। तो कहाँ Mm-hmm. सेफ है जर्नी? सेफ कैरियर ढूंढना है, सेफ जॉब नहीं ढूंढना। Mm-hmm. आपको अपने कैरियर पे काम करना है, आपको अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे काम करना है कि मैं Exactly. यहाँ हूँ या कहीं हूँ, मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं हूँ, और मैं वैसा ही लोगों को दूंगा जैसा मैं देना चाहता हूँ। वो अच्छा Exactly. होना चाहिए। अगर सेफ कैरियर चाहिए, देन डोंट एक्सपेक्ट ग्रोथ, Growth. डोंट Mm-hmm. एक्सपेक्ट नेक्स्ट लेवल, डोंट एक्सपेक्ट मच सैलरी, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मच। Mm-hmm. स्टैग्नेट चलता रहेगा। हाँ, जो छोटा इंक्रीमेंट है, जो 10%, 5%, 2% जो आपकी कंपनी का है कि वाइल प्रोग्रेस दे रहा है, वो मिलता रहेगा, बट यू आर सेफ। If you don't want to be safe, I'm not saying to take risk, but the moment you start taking risk in a positive way, Mm-hmm. calculative risk, you have chances of growth. Mm-hmm. That's a simple point. Okay, sir. So yeah, I think we need to be aligning the skill set we have with the jobs we are applying for, so that there is a balance between what we love doing and what we are supposed to be doing to make a living. And if it is possible to choose your career, then we can definitely, select the career of our choice. What is the most important quality a person should be having in their personality, which will help them be successful in their personal and professional lives? Like, what is the single most important thing a person should have? Yeah. So as it is related to personality, and it is my forte, so I would just say in brief, as I told already, that personality जो है वो original है. Mm-hmm. There are 4 kinds of personalities, as I would just be like powerful, one perfection, one is peaceful, one is popular. So these 4 kinds of personalities are there, but this is the only words, but there's a bigger research behind it and bigger, deeper sense of that. But what I'm saying, जो भी आपकी personality है, first of all, you need to accept that personality. मैं जैसा हूं, हम लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मान लो मैं बड़ा पीसफुल आदमी हूँ, पीसफुल मतलब शांति प्रिय, लेकिन जब मैं पार्टियों में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, मैं दूसरों को देख के अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर लेता हूँ, यार वो देखो क्या डांस कर रहा है, वो देखो यार उसने कितनी बढ़िया बात कर दी, सब लोग उसके साथ जा रहे हैं, मेरे पास तो कोई नहीं आ रहा। यू गॉट माय पॉइंट? अभी जब पीसफुल हो आप, तो आपको शांति चाहिए, तो आपको उसी माहौल में जाना चाहिए जहाँ शांति है। आपको उस माहौल में कम जाना चाहिए जहाँ शांति नहीं है, जहाँ पर इस तरह के हैं। Exactly. Are you getting my point? Exactly. When you know about yourself and when you know about other, आप पीसफुल हो, आप पावरफुल आदमी के पास चले गए। समझना है, पावरफुल का मतलब जो पावरफुल है उसकी पर्सनैलिटी पावरफुल है, उसकी गलती नहीं है। जैसे पीसफुल है वैसे ही पावरफुल है। पावरफुल आदमी और पीसफुल आदमी की कभी नहीं बनती। पावरफुल यहाँ है, पीसफुल यहाँ है, शांत प्रिय है, वो पावरफुल है। हमेशा पावरफुल आदमी पीसफुल आदमी को डोमिनेट करता है। अब पीसफुल आदमी परेशान, यार मैं जितनी कोशिश कर लूं वो हमेशा मेरे ऊपर आ जाता है, ये है वो है।
भाई ये आपकी पर्सनैलिटी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड नॉट टू फ्रस्ट्रेट, वी नीड नॉट टू बी व्हाट वी कैन से, आपको ज्यादा डाउट नहीं करना अपने ऊपर. आप अच्छे हो, whatever is your original personality, keep up to your original personality. Yes, learn a lot of things, learn soft skills, work on that, but that is only for professional behavior, professional approach. But in personal life, you should be like you, whatever you are. Exactly. So yes, I think that's a very important point we all need to be considering in our lives. We often try to do something which is totally opposite of what we are actually made for doing, and then there's always a resistance, which leads Yes. to frustration and other challenges. Yes. So overall, sir, it was really nice speaking with you. It was really insightful conversation. Towards the end, I would just like to thank you for your valuable time. And if you have any concluding remarks, then you can definitely share with us. First of all, thanks, Prince, for inviting me, and it really gave me an opportunity to explain how best I can. I tried my level best here also. So I would definitely hope that it should reach to the larger audience. They should understand, and if they have any query, any concern, maybe they can reach to you, they can reach to back to me also. So we can at least try our level best to help people understanding the reality of the life. It's a simple, beautiful life we have got. इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर सके लोगों के लिए, अपने लिए, और एक हैप्पी एटमोस्फेयर बनाए. लाइक आई एम रनिंग दैट थिंको वाइज. So Thinko wise is like improvise something wise. So I made it Thinko wise. So Thinko wise is nothing but to explain, to aware, get the, the awareness of wise thinking. Right now, the 90% problems are coming because of poor thinking. My motive in life is to reduce that poor thinking level so that wise thinking can be there. The moment we start thinking wisely, believe me, Prince, problems होगी ही नहीं. प्रॉब्लम्स हम लोगों ने क्रिएट की बिकॉज ऑफ आवर थिंकिंग प्रोसेस, पुअर थिंकिंग की वजह से. कोई भी प्रॉब्लम जो है वो किसी ना किसी वजह से पुअर थिंकिंग की वजह से है. तो माय मोटो ऑफ लाइफ, माय विजन इन लाइफ इज टू मेक अवेयरनेस टुवर्ड्स वाइज थिंकिंग. So that is my concluding words. Let's walk towards wise thinking and to make this beautiful life more beautiful. Okay, definitely. I think critical thinking is a skill we all must be working on. We can definitely in the future sometime even have a conversation on what critical thinking skills actually are, which would help us excel in our personal and professional lives. So thank you so much, sir, for your valuable time and having a word with us. It was really nice speaking with you.